or the body in this case. Yeah. So you find that, if this driver is not there, the one which is sitting inside on and is holding the steering and all that, then the body will not make sense. The machine will stop, right? Even a car also, though sometimes it is parked on a road, but you will find that it will just be parked for all time. उसको कुछ नहीं होगा, वो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी रोड के ऊपर. If nobody comes and kind of enters into the car and drives the car, then only the car will actually start moving. Otherwise, it will not move. So same thing as Krishna is saying in Bhagavad Gita 18th chapter, that yantra rudhani maya, actually yantra, it is a machine. It's kind of a yantra seated as on a machine made up of the material energy. The soul falsely identifies with the body, carrying different conception of life from one body to another body. So yeah. So when we experience a dream at night, our body lies on the bed. But when we go somewhere, we actually go somewhere else. Sometimes you may find that, a boy is sleeping on the bed and he's into America practically, roaming at New York and many other places. Dream में हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, right? So same thing. The body is lying on the bed, but we have gone elsewhere. So when one dreams of a bulldog chasing him for a long distance, one rolls off the bed कि उसके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है और वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है बेचारा, और वो ऐसे सपने देखते देखते गिर जाता है बेड से नीचे गिर जाता है. So now he is sweating, पसीने पसीने हो गया बेचारा, or he is breathing heavily, right? Because the dog was chasing him behind. So when he realizes that it was only a dream, it was only a dream and there is no dog practically, he doesn't have to fear, then he becomes kind of peaceful कि चलो बच गया, right? So similarly, sometime young boy, he dreams of a young girl sleeping next to him, so he imagines enjoying with her and talking to her, and he may just be embracing a pillow, but he's imagining all that, and sometime it so happen that he releases a semen also, right? So dream mein kya kya ho jata hai aadmi ke sath. So what is said here is this one, right? So you see that boy is sleeping and that girl is coming in the dream and the dog is chasing, but then when he gets up, he finds nothing practically. He doesn't see anyone around him. So in the same manner, our 80 to 100 years, like आजकल तो वो भी मुश्किल है, लोग ज्यादा से ज्यादा 60-70, और that also is very difficult. लेकिन अगर मान लो अगर कोई 80-100 साल भी जिए इस बॉडी में, that is also like a dream only. वो भी एक सपना है. ये सपना थोड़ा बड़ा है. This dream is quite big dream, and what we have in the night actually is a short dream that lasts for some duration, but this dream lasts for whole life. So our current body is one of the millions of bodies that we have occupied till now. You must have heard this concept now, that how the soul is actually changing the body after body, as Krishna says, tata dehantara prapti dhirastasna bhuyati, that dhira, a person who is in knowledge, he is not bewildered by this kind of change, right? But this change is happening. So one need not take successes and failure in one lifetime too seriously. Our material body is nothing more than a dress upon the soul. Sometimes some setback come in life. कुछ तो ऐसा हो जाता है जीवन में कि आदमी टूट जाता है एक तरह से, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं, अब सब खत्म हो गया. No, but if you understand that you are actually not this body, you are soul, then there is so much remaining, right? But if somebody thinks कि ये शरीर ही सब कुछ है और इस शरीर के अंत होने के बाद आदमी का अंत हो जाता है, then that is not the correct understanding. The correct understanding is that yes, this body may fall apart one day. Like the dress which I'm wearing right now, it may get old. So that does not mean that mera existence hi khatam ho gaya. No, I will get a new shirt, right? So same thing happens to the soul. Soul actually keep on moving
from one body to another. But some people are there, they will pay a lot of attention to the body. उनके लिए शरीर ही सब कुछ है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि how this old lady sees only painting the cage, जो पिंजरा है उसको ही sees kind of painting, but the bird, the parrot that is there inside, उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं. So क्या हुआ फिर? The parrot actually was dead after some time because बेचारे को ना तो कुछ खाने के लिए मिला, ना कुछ पीने के लिए मिला, तो उसका अंत तो होना ही था. So that's what is happening nowadays. People are paying a lot of attention to this body, but they have forgotten about the soul. They have no information of the soul. ये देखो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ तो निकल रहा है उस आदमी से और जा रहा है, right? So this was recorded in camera. So the soul is imperishable. The imperishable, soul is imperishable. Thus, the imperishable soul, after death of the material body, moves to the next situation. At the death, the soul gives up the gross body, but carries the subtle body birth after birth until he achieves the perfection. The subtle body stores his unfulfilled desire, impelling him to accept further material bodies. तो सेम कंसेप्ट बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आदमी शरीर बदलता जाता है, दिस गेट्स, ये कंटिन्यू होता रहता है. कब तक वो शरीर बदलता रहेगा? हाउ मेनी शर्ट मोर आई हैव टू वेयर, दैट इज द क्वेश्चन. Until unless one reaches the platform of perfection, he will keep on changing the bodies, as you see in this photo, right? So this is actually the process of attaining new gross body. You see, the person is dying, आदमी बूढ़ा हो रहा है, मर जा रहा है, फिर वो एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेके एक ग्रोन अप, और फिर बूढ़ा हो रहा है, फिर मर जा रहा है. और इतना ही नहीं, you will see that the soul is taking different bodies also, right? कभी शेर का बॉडी, कभी घोड़े का बॉडी, कभी कुत्ते का बॉडी, dog, cat, birds, what not. There are 8.4 million species of life based on his karma. So when the gross body stops functioning, people call it death. Mar gaya, abhi chala gaya. At that time, the subtle body will carry the soul, to the next body according to the good and bad impressions and desires stored in our mind. Thus, the soul within the subtle covering is put into the stamina of a certain father. तो soul कैसे आता है, कहाँ से आता है, और कैसे वो how he gets the body, that phenomenon is said here. कि कैसे soul actually subtle covering is put into the stamina, the semen of a man, the father, who will inject the stamina with the soul into the female's egg, and then a plum shape body will develop with 9 holes. पहले 9 holes बनते हैं, फिर धीरे 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 the body develop होता है, legs develop होते हैं, and body becomes complete after that. So either it be a cat body, dog body, or tree body, plant body, any body. We have so many bodies available. So now as we go further, we'll understand more this concept. तो कुछ लोग होते हैं, उनको सोना बहुत अच्छा लगता है, उनको आप बोल दो कि आप आप 10 घंटे सो, 20 घंटे सो, उनके लिए बहुत अच्छा है. एक बार मैं जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे एग्जाम खत्म हो गए थे, तो हमने मतलब इट वाज अ वेरी गुड टाइम ना, एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो थोड़ा मस्ती का टाइम रहता है. तो सब लोग, हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, तो हम लोग सब सोच रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, व्हाट टू डू. And then we were kind of searching for one of our friend, मतलब एक आदमी जिसको हम जानते थे, हमारे ही सर्कल का था. So we were not able to find him. एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फिर 2 दिन के बाद वो आ रहा है किसी रूम से निकल के, ऐसे करते हुए, पूरा ऑलमोस्ट लाइक उसने रिकॉर्ड बना दिया था हॉस्टल में. ऑलमोस्ट लाइक 20 घंटे सोया था लगातार, कंटिन्यूअसली. ना तो उसने डिनर लिया, ब्रेकफास्ट लिया, ना ही उसने लंच लिया, सब कुछ मतलब. सो सम पीपल, द पॉइंट इज, सम पीपल लाइक टू स्लीप, एंड दिस इज वेरी कॉमन, राइट? लोग सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं. So when one ignores God's law and engages in sinful activities with his impure mind and senses, then one glide down the animal bodies. तो अगर भगवान फिर बोलते हैं कि देखो भाई, अगर आपको सोना ही है तो फिर आप ये जो मानव का जो शरीर दिया गया है,
जो ये आपको इतना अच्छा फैसिलिटी दिया गया है ह्यूमन फॉर्म का, आप उसको क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो हम आपको एक ऐसा शरीर देंगे जिसमें आप दिन रात सो सकते हो, और वो क्या है? पोलर बेयर। पोलर बेयर बन जाओ। पोलर बेयर, यू नो इट स्लीप्स फॉर 6 months समटाइम एट अ स्ट्रेच। 6 महीने के लिए सोता रहता है। सो भगवान ने वो सब अरेंजमेंट बना के रखे हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं, मेरा नॉर्मल खाने से नहीं होता है, नॉर्मल वेज खाने से मेरा नहीं जमता है, मेरे को नॉन वेज खाना है, तो भगवान बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि अगर आपको नॉन वेज ही खाना है तो फिर आपने मनुष्य जन्म क्यों पाया? हम आपको शेर का शरीर दे देते हैं, उसमें आप जितना भी हो सके, वट एवर एक्सटेंट यू वांट टू ईट, फ्लैश यू कैन ईट. So the Lord actually has made that arrangement, right? The same way, some people nowadays, you see now many of the cinemas and movies and all that, people hardly wear cloth. बेचारे ऐसे लगते हैं कि गरीब हैं, कपड़े ही नहीं है इनके पास, right? So they want to expose all the time their bodily limbs and all that. तो भगवान बोलते हैं देखो ऐसा है, मनुष्य जीवन इसके लिए भी नहीं है। मनुष्य जीवन तो एक बहुत ही श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए है, श्रेष्ठ लक्ष्य पाने के लिए है। So why are you wasting your human form like this? अगर ऐसा ही करना है, आपकी अगर प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं, तो फिर why don't you get the body of a tree? अब ट्री बेचारा कभी कपड़े पहनता नहीं, वो तो ऐसे ही बिना कपड़ों के रहता है. So then become a tree, like that it says. So for instance, one may be a PhD from MIT USA, right? But when he dies, the soul has to occupy another body of a child. और वो नहीं कह सकता कि देखो देखो ऐसा है कि पिछले जन्म में मैं पीएचडी करके आया हूँ, तो इस जन्म में फिर मैं उसके ऊपर जाऊंगा, पोस्ट पीएचडी करूंगा, पोस्ट डॉक करूंगा, वो सब करूंगा। क्या ऐसा कोई कह सकता है? कैन समबडी से लाइक दिस? नो, ही कैन नॉट से, बिकॉज उसको फिर से वही एबीसीडी बाबा, बाबा ब्लैक sheep एंड ऑल दैट, उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड मुक्ति मीन्स व्हेन देयर इज नो मोर वर्किंग ऑफ द सटल बॉडी आल्सो. So this annihilation of this gross body, that is not mukti, because the subtle body will work. तो subtle body जो है, आपने शायद सुना होगा कि हमारे 3 प्रकार के बॉडीज हैं, एक तरह से 3 कवरिंग है. First covering is actually gross body, like what you are able to see me now. So this is my gross body actually. But then there is a subtle body also, which is made up of man, buddhi, ahankar, right? Intelligence, mind and false ego. और उसके भी अंदर आप जाओगे तो आपको सोल मिलेगा, द स्पिरिट सोल, आत्मा. सो नाउ वी आर गिविंग अप दिस ग्रोस बॉडीज वन आफ्टर द अदर. हम ये जो शरीर है इसको तो त्याग रहे हैं, लेकिन जो सटल बॉडी है वो हमारे साथ कंटिन्यू कर रही है, और वो जब तक कंटिन्यू करती रहेगी जब तक हम ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इससे बाहर नहीं आ जाते. Till the time we come out of the cycle of birth and death, it is going to continue with us, right? So बेचारे को फिर से ABCD बाबा ब्लैक शेप को सबसे स्टार्ट करना पड़ेगा. Person on the bodily platform thinks I'm the man, I'm woman, I'm Indian, I'm Brahman, etc. Right? Brahman, etc. Such a person is called as conditioned. For example, let's say a man who owns a Mercedes Benz and he feels proud and identify himself with this car. When he sees someone throwing stones on the window glass of the car, उसको लगता है कि मेरे दिल पे लगा, पत्थर कार पे लगा है, बट उसको ऐसा पेन महसूस होता है, उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसके दिल पे लगा, पत्थर. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ही इज वेरी मच अटैच्ड, ही इज वेरी मच अटैच्ड टू द कार. अहंकार बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है कि मैं ही कार हूँ. तो लोगों को ये अहंकार रहता है कि मैं ही वो कार हूँ. तो कई बार जो अमीर लोग रहते हैं उनके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज बेंज ये सब कार रहती है, तो कभी बेचारे चला रहे होते हैं रोड पे और आगे से आ जाता है ठेले वाला, तो वो तो जोर से चिल्लाता है, अरे ठेला साइड हो जा, ऐसे चिल्लाता है. तो वो आदमी ये नहीं समझता कि ना तो वो आदमी जो आगे आ गया ठेला है, और ना ये आदमी जो कार में बैठा है, जो एक बहुत ही कॉस्टली कार है, ये एक कार है. दोनों अलग आदमी है. कार इज जस्ट लाइक ए मटेरियल थिंग, दिस हैज नथिंग लाइक अ स्पिरिट इन इट. तो that's how people have so much of attachment for these things. So अगर कार को कुछ अगर हो जाता है तो they feel very bad,
they feel like उनको ही कुछ हो गया है. So now we will do one activity here. What are the similarities and differences between bulldog, dream, and a boy holding MIT doctorate? तो क्या क्या similarities हैं और differences हैं a bulldog, dream, and a boy holding MIT doctorate? आप में से कोई anybody of you wish to tell कि क्या so ये दोनों मैंने एग्जांपल दिए हैं. I gave both examples. Now you have to tell that what are the similarities and differences between these two examples. I gave you example of a boy who has been chased after by a dog, a bulldog उसके पीछे भाग रहा है और एक बॉय जिसके पास एक MIT डिग्री है. उन दोनों में क्या फर्क है? What is the difference? What is the similarity? You can unmute yourself and speak, or you can write in chat, whatever comfortable to you. Yeah. One person has replied in chat. Okay, just let me see. Yeah. Okay, both have to go through birth and death cycle. Okay, great, Jayesh. That was a good one. Yeah, any other? Both have to go through birth and death. दोनों के ही केस में आएगा. You are right, Jayesh. Right, so these are some of the similarities, right? That दोनों को ही करना पड़ेगा. Their bodies are different. Yes, Rushikesh is saying that their bodies are different. Okay, that's great. That's very nice. So, what are the similarities? As some of you said that actually दोनों ही birth and death, they will see both of them. Another similarity is कि दोनों ही सपने देख रहे हैं. अभी एक आदमी सोते हुए सपने देख रहा है और उसका सपना छोटा है, लेकिन ये आदमी उसको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा डिग्री पा लिया है. आई गोट अ वेरी नाइस डिग्री एंड ऑल दैट, बट वो भी सर एक सपना ही है. क्यों वो सपना है? बिकॉज डेथ के बाद सब कुछ फिनिश. देखो, आप सपने से जब उठते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता. इसी तरह आदमी जब मर जाता है और फिर से उठता है दूसरे शरीर में, उसको कुछ नहीं दिखता पिछले जन्म का. राइट. सो इस जन्म में तो MIT डिग्री मिल गया, लेकिन जब दूसरा जन्म होगा तो फिर MIT डिग्री नहीं रहेगा, वो ABCD वो सबसे स्टार्ट करना पड़ेगा. राइट. So these are the differences. Right. Understand what principle can we draw from owner of the Mercedes Benz who was worried about damage? Principle can we draw from owner of the Mercedes Benz who was worried about damage? Okay, the lesson there was that this person is thinking that he is that car. तो कार को लगा है पत्थर, but he is thinking that उसको लगा है. So he is thinking like that. So Jayesh has written, we should not think about material body. At the end, it is going to be destroyed itself. Yeah, correct. That's correct. Yeah. So ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते. राइट. तो उसको बोलते हैं सफरिंग या सेटबैक हो गया लाइफ में. ऐसा कुछ हो गया कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट. तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शरीर तो आज है कल नहीं. तो अगर कुछ गलत हुआ है शरीर के साथ तो इट्स ओके, इट्स फाइन. इफ एनीथिंग हैपेंड रॉन्ग इन अवर लाइफ, if we lost somebody near and dear one, it's okay, somehow or other we have to accept it. राइट. उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे हम, नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है.
तो फिर हमारी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी. So we have to accept the fact in life that yes, the things related to body are temporary. वो आज ना या तो कल जानी ही थी, right? So that's what we have to think. Yeah. So of course this is a very nice exercise which I think we could have done, but we are skipping it for now. Basically underline the words that boys are conscious about. So what, okay, still we can do at least one of these. You can write in the chat box from the given options that you see here in the black font, then pink font, green, and all these fonts. Many words are kept, so you can pick up the words that boys are conscious about. मतलब जो लड़का रहता है उसको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है उसके प्रति, वो कौन कौन सी चीजें हैं. Okay, somebody wrote intelligent. Okay. Okay. Yeah, respectable. Okay. Yes, you have to choose from these given options. Correct. French beard, rich look, mobile model. Oh, now this is what I was looking for. Yeah, correct. So this is what a boy will think about, right? And what will the girls generally they think about? What they are conscious of? Hairstyle, okay. Now, what girls are very conscious of? Let us see how many of you answer. Makeup, lipstick, nail polish. Yeah, these all matters for them. These are the main things for them, right? So very good answers. Yeah. Answer now. Pick up the words that both boys and girls are conscious about presenting oneself. तो वो भी आप लोगों ने बताया. हेयर स्टाइल दोनों को परवाह रहती है, नो. बोथ ऑफ देम थिंक कि मेरा हेयर स्टाइल अच्छा हो, मेरा इंटेलिजेंट हूँ, रिस्पेक्टेबल हूँ, वो सब, राइट. मॉडेस्ट लुक है, प्लीजिंग अपीयरेंस है, तो दोनों ही उस बात की चिंता करते हैं. या करेक्ट. सो या नाउ द लास्ट वन इज you can pick up the word that a devotee of God should be conscious about. मतलब अगर मान लो कोई इंसान भगवान का भक्त है, तो उसके लिए क्या मैटर करता है ये सब ऑप्शंस में से. Yeah. Okay, good. Somebody has answered. Lovable. Oh, many of you have written the same thing. Correct. Lovable, and of course he is also expect to be uh, intelligent, and then he is also modest looking. He may not be wanting to look very superhero or something, but that's how it is, right? So thank you all very much. Very good answers. Many of you got it right. So we go further. Have you seen how much time people spend in decorating their hair? They apply varieties of fragrant oils and shampoos to keep it smooth. आजकल तो वो भी है, जेल लगा के उनको खड़ा करते हैं. They apply some gel kind of thing, and then ears will be like this only, as if there is some electric shock given to that person. Yeah, it happens, right? You must have seen that. Some people have this hair standing like this boy, so they put some gel and all. So we find that lot of time is spent. पहले तो लेडीज के लिए पार्लर रहता था, लेकिन आजकल मेंस के लिए भी पार्लर है. उसका मतलब क्या है कि मेंस भी they are giving so much of time for their looking and all that. But if by mistake one hair falls into the food while cooking and you happen to get it in your lunch plate, how will you feel? Disgusted. अरे बाल आ गया खाने में. So how do you feel? Disgusted, isn't it? So when our nails are connected to our body, they are good. लेकिन वो काट दिए गए तो वो कहाँ जाते हैं? डस्टबिन में जाते हैं. फिर उसका कोई यूज नहीं है, right? Same with the hair also. Now because hairs are connected to the body, we are decorating them very nicely and trying to do so many things and all that.
but the moment they are cut off in the saloon shop, कहाँ पे जाते हैं? डस्टबिन में जाते हैं, right? So the value is only when they are connected to the body. So thus the hair or the nails assume importance only as long as they are connected to the body. Similarly, the body has its importance also only when the soul is present. अगर आत्मा उसके अंदर है तो ही बॉडी का वैल्यू है, नहीं तो बॉडी को कोई क्यों रखना चाहेगा? अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसके शरीर को देखकर लोग डर जाते हैं. एक बार बेंगलोर में मैं था, तो वहां पे कुछ लोग बता रहे थे कि एक आईटी इंजीनियर अपनी फैमिली के साथ रहता था किसी फ्लैट में बेंगलोर में, और एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी की मृत्यु हो गई रात को. बेचारा अकेला रह रहा था वाइफ के साथ, और उसकी रात को मृत्यु हो जाती है. उसका जो मृत शरीर है वो वहीं फ्लैट में जो उन्होंने लिया हुआ था बेंगलोर में वहीं पे रहता है. तो वाइफ इतना डर जाती है कि हार्ट अटैक वगैरह कुछ उसको आया और वो मर गया. तो वाइफ उसको देख के इतना डर जाती है डेड बॉडी को कि वो रात को अपने फ्लैट में सोती भी नहीं है, वो किसी पड़ोसी के घर पे जाके सोती है क्योंकि मृत शरीर पड़ा है. देखो वो वही शरीर था, दैट वाज द सेम बॉडी. शी वाज डे इन डे आउट, शी वाज काइंड ऑफ वेरी नियर. शी वाज द वाइफ ऑफ दैट मैन. बट क्योंकि वो सोल नहीं रही उसकी शरीर में, तो नाउ दैट same wife does not want to be near to the husband, you see. तो ऐसा ही होता है, when the soul is in the body, relatives of that person try to save his body at all cost. But the moment the soul leaves the body, the relatives start worrying about how to get rid of the body as soon as possible, because it starts stinking intolerably, right? In fact, the Buddhist, they meditate on the foulness of corpse to remember the horrible condition of the material body within the soul, without the soul. So we find that जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वो एक मृत शरीर के ऊपर ध्यान लगाते हैं. क्यों? Because they want to get that realization कि ये जो बॉडी है ये किसी काम की नहीं है अगर आत्मा नहीं है इसके अंदर. If the soul is not there, it is useless. तो कई बार कहते हैं ना कि चला गया चली गई, तो what does that mean? क्योंकि पर्सन तो वहीं पे पड़ा रहता है मृत अवस्था में, he is there only, but the soul actually has left. Soul has left the body and it has gone somewhere else. Yeah. Now this photo you must have seen earlier also. This is what I was talking about, that there is a gross body made up of earth, water, fire, air and ether. Then there is a subtle body which is made up of mind, intelligence, false ego, and the soul is actually eternal and it is knowledgeable and full of bliss, right? So this is what is illustrated in this uh, picture. So illusion due to the subtle body. The soul is actually covered by the gross body and the subtle body. So this is one exercise which we could have done, but I think we'll skip it for today. Yeah. So singing competition. आपके कॉलेज या स्कूल में कभी हुआ होगा singing competition, right? Suppose you are participating in that, in a singing competition. Now the false ego feels that I am great. मेरे से बड़ा कोई नहीं है. I must beat others. सबको हरा दूंगा आज. देखता हूँ मेरे से आगे कौन निकलेगा. So regarding our ability to sing, there is a tussle between our mind and intelligence. The mind वो feel कर रहा है कि I am scared. I don't think I can do it. मुझे डर लग रहा है. स्टेज पे जाने के बाद क्या होगा क्या पता. So there are many people here. The intelligence thinks, so what? You have prepared well. पूरी तैयारी के साथ आए हो भैया. If you can sing so well in the bathroom में तो बहुत अच्छा गा लेते थे. Why can't you sing here on the stage? Come on, आ जाओ. Right? तो ऐसे बोलती है इंटेलिजेंस. माइंड डरता रहता है बेचारा. नहीं 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 क्या होगा अगर मैं स्टेज पे गया और मैं नहीं गा पाया तो. And the intelligence says, don't worry. बाथरूम में तो बहुत अच्छा गाया इतने दिनों तक. वहां भी गा लोगे. So like that, the intelligence and the mind, they are having a tussle between. So if your mind is stronger than your intellect, it wins the argument. अगर mind strong हुआ तो mind जीत जाएगा और उसका क्या परिणाम होगा, नतीजा,
उसका नतीजा ये होगा कि आप यू विल गिव अप द सिंगिंग कंपटीशन। आप सोचेगे कि आपके बस की बात नहीं है, छोड़ दो इसको, और शायद हम कंपटीशन हार जाएंगे। बट अगर इंटेलेक्ट, अगर बुद्धि जीत गई, इंटेलिजेंस, then what will happen? The fear, will be gone, and we may actually win the competition because the confidence has increased, and we will do our best there. So you see how it is actually related. ये कैसे आपस में related है? तो mind का सुने या intelligence का सुने, वो tussle सबके जीवन में है. Everybody has to face that tussle in their life. So this was one example. Now the other example is the academic success. अभी आप लोग सब पढ़ रहे हो college में first year. Somebody told me you are from first year. So I don't know how much it happens there in your place, but here when I was in NIT Warang, a lot of suicides used to happen. A lot of people, sometimes people used to jump over the 8th floor और नीचे कूद के मर जाते थे. कोई पंखे से लटक के मर जाता था. So हम लोग ये डायलॉग देखेंगे. Maybe some of you can become Ram and some of you can become Sham. So I need 2 volunteers now. You can unmute. So what Ram is saying, one person will say, and what Sham is saying, the other person will say. So please, somebody can become Ram. Somebody can become Ram. Yes, somebody can become Ram and say loud. You have to just read it. I'm not expecting anything else. Hello, sir. Yes, yes. I will be a Ram. Okay. I will be Sham. Okay, great. Yes, please start the conversation. Ram. Sham, do you know Victor entered a pond and committed suicide? So Sham says, alas, he has been a topper in 3 years of BTech, and only this time I heard that his grades went down and he failed in 2 papers. But he could face this parent and parents who had great expectation from him. So unfortunately, he didn't have a bigger picture of life, in which bagging of top rank in one of the items of life. True life is much more success means to do our best and depends on blessings of God and superiors. If he strengthened his intelligence with wisdom of Gita, his life would have been saved. Yeah, see. So this is what I was telling about, that sometimes people are highly accomplished academically. लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ उनके जीवन में तो तुरंत सुसाइड कर लेते हैं. देखो ये आदमी चढ़ रहा है ऊपर, वो डाला रस्सी और लटक गया, right? So something similar the boys do sometime in the college. क्योंकि क्या होता है ना, एक बार उनको लगता है कि मैं टॉपर हूँ तो मैं ही टॉपर होना चाहिए. एक बार एक IIT बॉम्बे की बात है, एक there was one girl. So she was topping every semester. 7 सेमेस्टर तक उसने टॉप किया, एक बड़ा जॉब उनको मिला. और फिर 8वें सेमेस्टर में ऐसा हुआ कि एक लड़के के 2 नंबर ज्यादा आ गए उनसे, 2 नंबर सिर्फ. तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया. उनको लगा ऐसा कैसे हो गया, देखो मैं ही टॉपर थी हर साल, अब ये आदमी मेरे से आगे निकल गया. तो क्या किया उसने पता है? सुसाइड कर दी. So some of you may wonder, my lord, इतने बड़े बड़े लोग भी सुसाइड कर लेते हैं. यस, ट्रू, दैट्स ट्रू, बिकॉज उनको भी जीवन के लक्ष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं. तो यही बताया गया है कि अगर सक्सेस मीन्स टू डू अवर बेस्ट एंड डिपेंड ऑन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड सुपीरियर्स. If he strengthened his intelligence with wisdom of Gita, his life would have been saved. बेचारे को अगर किसी ने भगवत गीता जाके दे दी होती और वो समझ गया होता कि मैं शरीर नहीं हूँ, आफ्टर ऑल मैं तो आत्मा हूँ, तो जो भी कुछ हुआ शरीर के साथ हुआ, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा शरीर तो है ना. तो ऐसा बेचारा नहीं सोच पाता है. तो इसलिए अगर गीता की नॉलेज जैसे आप लोगों को आज मिल रही है, अगर उसको भी मिल गई होती तो बेचारा क्या पता बच गया होता. बट
That's why this knowledge is very important. लाइफ में सब कुछ भी बर्बाद हो गया, सब कुछ छूट गया और ऐसा लगे कि जीवन में कुछ आशा है ही नहीं, फिर भी अगर आपको ये नॉलेज है, भगवद गीता की नॉलेज है, तो आप देखोगे कि आपका जीवन भले ही एक्सटर्नली बाहरी रूप से टूट गया है, बट इंटरनली स्टिल यू विल बी वेरी मच, मतलब आप एक स्टेडी माइंड पर्सन रहोगे, फिक्स्ड अप, यू विल नॉट बी so much disturbed by the whole thing. So yes, we go ahead. Ram. Ram, Sham. Yes, Sham. I have also heard that success is not the middle one, but in the race run. Yes, Victor got to study in BITS. That itself is a victory for him. And in this world, Lord Krishna says in 18th chapter of Gita that when we create fire, smoke also accompanies it. Similarly, all endeavors we make will be accomplished by some degree of imperfection. Despite our mind creating a mess, we have to learn to live with God given success without becoming frustrated and committing suicide. Thank you for your wonderful company that gives me great wisdom to learn in my life. It is all the company of God's devotes that I have been benefited from, which I shared with you. You see the great wisdom, कैसे उसने मतलब उसको बताया and how he is getting benefited. तो ऐसे ही जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच जाएगी. अदरवाइज व्हाट विल दीज फेलोज डू, यू नो, वो या तो सुसाइड कर लेंगे या मर जाएंगे या किसी और को मार देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, राइट? So crossing the road, this is the third thing. So where the intellect is stronger, reason prevails and decisions are made after giving issues due thought. In this case, we are less prone to make judgments impulsively. Where mind is stronger, feelings and impulses are more important and decisions are made without much thought because the intellect takes a backseat. Here, there are more chances of making mistake because the way we feel is often strongly dictated by the immediate needs, conveniences, and pleasures rather than long-term benefits or consequences. For example, a boy is waiting impatiently to cross the road. तो वो वेट कर रहा है, मतलब you know, you see in this photo, in this video, what is happening. So he is waiting to cross the road and that person was, you know, वो वेट नहीं करना चाह रहा था, वो जा रहा था, नहीं मेरे को जाना है. उसने रोकने की कोशिश की लेकिन क्या हुआ, पीछे से गाड़ी आई. So in this crossing of the road, his mind says he, come on, just cross, how long can I wait, बहुत हो गया वेट, अभी मेरे को जाना ही है. बट उसका इंटेलिजेंस बोलता है कि द ट्रैफिक बहुत भारी है भाई, एक थोड़ा बहुत सेकंड वेट कर लो, क्या जाता है, बेटर टू रीच अ फ्यू मिनट लेट देन नेवर. थोड़ा लेट जाएंगे लेकिन पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि आदमी पहुंच ही नहीं पाया. सो ऐसे आई थिंक दे से ना, दुर्घटना से देर भली, लाइक दैट दे से. If his mind wins, the boy dashes across the road and he is likely to meet with an accident. And if his intellect wins, he may go home 3 minutes later, but he has taken total care of his safety in this particular situation. तो उसके mind और intelligence में वही टसल चल रहा है. अगर mind जीता तो फिर हमने देखा क्या हुआ वीडियो में, अगर intellect जीता तो he may reach late 3-4 minutes, but he will be safe. In this video also you see how people are, right, they are practically dead in this. Now one question comes to many of us actually, that अरे हम लोग तो अभी सब जवान हैं, लेकिन ये सब गीता, ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं या फिर बहुत उनको कुछ करने के लिए नहीं हो तब होनी चाहिए थी, अभी क्यों हो रही है सब बातें. नो, दैट इज रॉन्ग. क्योंकि ये नॉलेज अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिला, राइट?
तो sometime we chant, we do some meditation and all like this boy is doing. लेकिन बेचारा बूढ़ा बैठ ही नहीं पाएगा, उसकी कमर में दर्द, फिर उसको सांस की प्रॉब्लम, उसको दिखेगा नहीं, और वो कुछ चैंट भी नहीं कर पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, तो ही इज नॉट एलिजिबल, ही इज लाइक अब उसके कुछ हाथ में नहीं रहा. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू स्पिरिचुअल लाइफ टू. द फॉल्स ईगो थिंक्स, अहंकार सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और माइंड कहता है कि नाउ इज द टाइम टू एंजॉय, मजा करो. और लोग भी कहते हैं कि अरे अभी तो खून गर्म है, मजा वजा कर लो लाइफ में. लाइक दैट पीपल से, आफ्टर ऑल द होल वर्ल्ड इज एंजॉयिंग, सब लोग मजा कर रहे हैं. आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू डू रॉन्ग थिंग्स, आई हैव अनदर 60 years टू गो बिफोर आई गेट ओल्ड एंड डाई. सब लोग गलत कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को भी करने दो, अभी तो बहुत जीवन बचा है इन सब चीजों के लिए. आई गेट ओल्ड एंड डाई, व्हाई बिकम लाइक ए मॉन्क नाउ. कुछ कुछ बोलते हैं कि आप तो साधु बन जाओगे, ऐसे ऐसे आप भगवत गीता में इंटरेस्ट लेते रहे और चैंटिंग वेंटिंग करते रहे तो साधु बन जाओ, ऐसे लोग कुछ लोग सोचते हैं. तो इंटेलिजेंस क्या कहता है कि नो नो, नहीं नहीं, हु नोज हाउ लॉन्ग आई विल लिव, क्या पता आजकल कोविड के चलते नौजवान लोग भी मर रहे हैं, राइट. तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि देखो मेरे पास तो अभी 60 साल और हैं और मैं जीवन में जो भी कुछ करना चाहूँ कर सकता हूँ, सब मेरे ऊपर है. नहीं सर, क्या पता आज आप हो और कल नहीं हो, कौन जाने. सो दैट मे कम एट एनी टाइम. There are so many boys dying in bike accidents, so many other youths dying of heart problem and brain tumor these days. There are still other committing suicide due to stress and no direction in life on how to face failures. तो देखो उनके लिए तो बुढ़ापा आया ही नहीं, they did not get old age. अगर वो लोग सोचते रहे कि देखो मैं ये सब मैं बुढ़ापे में करूंगा, तो वो प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए मौका ही नहीं है. So these all things are very, very important to know, to understand. So now that we have got company of spiritual minded friends, let me take uh, advantage of it now itself and not lose this golden opportunity. ये जो सुनहरा मौका मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहता. When I come out of the body as a naked soul, I will be answerable to God for all my deeds. क्या क्या किया है तुमने? Life is just like a journey with material and spiritual responsibility, like two rails. Railway track देखा होगा आपने. So the train has to go balancing both. तो अगर आप student हो तो आपको आपका जो academic life है वो भी balance करना होगा, और साथ साथ में जो भी आप ये जो practice कर रहे हो, chanting हरे कृष्णा और वो जो भी meditation वगैरह, वो भी आपको balance वे में करना होगा, रेल की दो पटरियों की तरह, right? So that we reach the ultimate goal of life. That should not be missed out. So let me practice spiritual life now itself and become spiritually wealthy, cheerful, and responsible while fulfilling my academic duties also. That is the real intelligence. So ye sab sahi hai, right? Now we see this example. It's a very nice example. आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इस example को. What is this example? There is a person on the chariot, the passenger, एक driver है और 5 घोड़े हैं. So our senses are like servo motors which reports to their boss or mind. Servo motors का reporting system होता है to some process. The function of the mind are thinking, feeling, and willing. The mind is the storehouse of thoughts, unfulfilled desires, and previous experiences. The mind is the common center for all knowledge acquiring senses. Right? All information that we gather, जो भी हम कुछ सीख रहे हैं या learn कर रहे हैं, तो वो माइंड में ही एक्चुअली स्टोर हो रहा है. All information are stored in the mind as impressions. Such impressions stimulate desire, hatred, attachment, etc., and make us act in right or wrong way. The mind is thus the reservoir of all ideas of sense enjoyment. So सब कुछ माइंड में स्टोर रहता है. माइंड में जिस तरह के हम विचार और सोच जो हमारी हैं, वो सेम स्टोर होती रहती है माइंड में, और उसी तरह के एक्शंस, सेम काइंड ऑफ एक्शन, सेम काइंड ऑफ thoughts we will have, जो भी माइंड में स्टोर है. Yeah, so this is what it was. So mind is like a micro processor which is programmed by the inputs and experiences. Mind is dirty or pure depending on our association with books. किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, किस तरह की मूवीज देखते हैं, किस तरह के हमारे फ्रेंड्स हैं,
पेरेंट्स, टीचर्स हैं. सो बेस्ड ऑन दैट हमारे माइंड में सब कुछ भरा हुआ है, राइट. कुछ लोगों का अपब्रिंगिंग बहुत खराब होता है. मतलब कुछ लोग ऐसे परिवार में पले बड़े होते हैं कि यू नो अब्यूजिंग, गाली वाली देना बच्चे शुरू से ही सीख जाते हैं, राइट. सो उनका तीसरा वर्ड, जब मैं हॉस्टल में रहता तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो आसपास रहते थे दूसरे रूम्स में कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे. उनका हर तीसरा शब्द एक गाली निकलता था. वो मतलब डिफॉल्ट निकलता था, उनको सोचना नहीं पड़ता था, और वो रोकना भी चाहते तो भी नहीं रोक पाते. तो यू सी, क्योंकि उनके माइंड में वो बैठ गया है, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग, जो उनका पालन पोषण हुआ है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ है कि बेचारा क्या कर सकता है, उसके दिमाग में वही सब कचरा भरा हुआ है. So same thing, mind is the storehouse of thoughts, past worries and future dreams, experiences, perceptions and attitudes. Intelligence is the decision maker, right? और mind जो है ये 5 सेंसेस के थ्रू काम करता है, eyes, nose, tongue, ears and skins. So जो भी knowledge हम लोग gain करते हैं, same thing the mind actually acts through that. तो एक मेंटल डायलॉग चलता रहता है, माइंड फील करता है और इंटेलिजेंस सोचता है. तो माइंड कहता है कि चलो मजा करते हैं, इंटेलिजेंस सोचता है कि नहीं मजा करेंगे तो फिर एग्जाम कौन रखेगा, the exams are coming up. So like that the mind gives all kind of that sort of suggestions, but इंटेलिजेंस को सोचना पड़ता है. तो जिस आदमी का माइंड स्ट्रांग है वो कुछ भी करेगा, चाहे उसका भला उसमें है या नहीं है, he will do anything. But if the intelligence is stronger, तो वो सोच के काम करेगा वो आदमी, right? So the mind wins, one succumb to temptation. If the intelligence wins, one can resist the temptation. So this is what happens. Yeah. So some of you are having questions right now. You can write in the chat box. Probably we'll have some time at the end for answering all these questions. Jayesh, so I will keep your questions. We'll answer it at the end. Yeah. Yes. तो ये होता है सबके साथ होता है ये. तो 2 ऑप्शन है, या तो आप गोदास बन जाओ या गोस्वामी बन जाओ. तो गोदास कौन होता है? जिसको उसके सेंसेस पूरा पकड़ लेते हैं. जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, यू आर लुकिंग द पिक्चर ना, तो सारे सेंसेस उसको पकड़ के खींच रहे हैं. नाक खींच रहा है, जीभ उसकी खींच रही है उसको किसी डायरेक्शन में. तो ये सेंसेस उसको खींचे जा रहे हैं, तो वो गोदास हैं. वो अपने सेंसेस का सर्वेंट है. जैसे सेंसेस बोलेंगे वो वैसा करेगा. सेंसेस बोलेंगे कि देखो ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा खाना है, इसको खा लेता है, तो वो तुरंत खा लेगा. ये देखो कितना अच्छा देखने में लग रहा है, तो देख लेगा. कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तो सूंघ लेगा. So the senses, if we become their servant, then we are actually godas. But if somebody can control these senses, then he's Goswami, right? So that's the difference. That is the difference. So if the intelligence is compared to father, then mind is like mother, and senses are like children. So ideally speaking, the father should give good guidance to the wife and children in family and take them in the direction that Guru has taught them. But if the father becomes a henpecked husband, then he's attached to his wife, who is in turn make him empty his pocket for satisfying the unnecessities demanded by the screaming children. This is what happens for most people. तो यही होता है कि आदमी के जो सेंसेस हैं और माइंड है वो उसको कहीं भी दौड़ाता है, उसको he kind of does a lot of those things. The senses make them godas, means a man who is simply a servant of his senses, but one who should become Goswami, means a master of the senses. जो Goswami होता है, he will be able to control his senses at will. अभी कुछ अगर बाहर ऐसा दिख रहा है कि ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, तो जो लोग सेंस कंट्रोल नहीं कर पाते, हालांकि उनको पता है कोरोना है बाहर, तो वो लोग तुरंत दौड़ के जाएंगे और खा लेंगे कुछ भी. बट somebody is Swami, he will have control of senses. वो मना कर सकता है. He can refuse. So chanting Hare Krishna boosts our determination and willpower, and studying Bhagavad Gita increases our discrimination to know the difference between right and wrong. So thus, when intelligence is powered with these two valuable tools, determination, discrimination, one can conquer the mind by the grace of God. So now we are almost
about to end our discussion. The false ego makes one identify with the body. A person influenced by the false ego imagines that I am great, मैं बहुत बड़ा हूँ. और ईगो जो है वो आदमी को ऐसे ही बना देता है, जिसको लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ. In the spiritual world, the soul is eternal, full of knowledge and bliss. But when he come to material world, he accept the sack of the burdensome material body and undergo suffering birth after birth. And this process is called as reincarnation. तो आज हम रीइंकारनेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें रीइंकारनेशन को समझना है और हमें ये लेसन लेना है कि मेरी लाइफ में ये कैसे एप्लीकेबल है. सो एक्चुअली रीइंकारनेशन हमारी सबकी लाइफ में एप्लीकेबल है, क्योंकि रीइंकारनेशन को जानने के बाद हम जो भी करेंगे लाइफ में, हम कुछ भी अगर लाइफ में करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक अगला जन्म भी है. और अगला जन्म मतलब इस जन्म के जो पुण्य और पाप मैं कर रहा हूँ वो भी आने वाले हैं नेक्स्ट लाइफ में. कुछ लोग सोचते हैं कि देखो मैंने इस जन्म में तो कुछ बुरा किया नहीं, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन दिस लाइफ, लेकिन मेरे जीवन में इतने दुख क्यों? यस, क्योंकि वो पिछले जन्म से आ रहे हैं. लेकिन लोगों को पिछले जन्म में विश्वास नहीं है, उनको आने वाले जीवन में विश्वास नहीं है, तो वो बहुत ही मतलब दे गेट्स ब्रेकन डाउन. उनको पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है उनके जीवन में. So in this way, we can see that reincarnation is very, very relevant to us. Otherwise, हम लोग बॉडी के बाद बॉडी चेंज करते रहेंगे, right? Otherwise, we'll not be able to get out. So in this world, there is one restless animal which will be driven away with a stick if anyone sees him. Can you guess which animal it is? So this is a question for you. एक ऐसा जानवर जिसको देखते ही सब उसको भगा देता है, कौन सा है वो? मैंने बहुत सारे फोटोज आपको दिखा रखे हैं स्क्रीन पे. एक ऐसा एक पशु है, एनिमल, दैट अगर वो आ गया ना तो सब उसको भगा देंगे, सब उसको भगा देंगे. भले ही वो उनको कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आ गया तो भगा देंगे उसको. What is that animal? Okay, some of you are writing the chat. Dog, Somnath is saying. Yes, anybody else has any other? कौन सा वो? Okay, donkey, Jayesh is saying. अगर वो एनिमल आ गया ना तो सब उसको भगा देंगे, कोई चुप नहीं बैठने वाला उसको देख के. तुरंत कुछ तो कुछ स्टिक उठाएंगे और उसको भगा देंगे. व्हाट इज दैट एनिमल? पिग, स्नेक, ओके. ओके, मंकी, कैट, ओके. ऋषिकेश, yeah. So Rishikesh actually gave answer. It's monkey. It's actually monkey. Monkey अगर आ गया ना बंदर तो सब उसको भगा देंगे, कोई उसको देख के चुप नहीं बैठने वाला. क्यों? देखो, आप देख सकते हो इस फोटो में, बहुत परेशान करता है बेफालतू में, राइट? So the restless animal is monkey. All monkeys are restless, but there is one monkey who is peaceful with semi-closed eyes and is absorbed in chanting Lord's name without becoming restless. तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा मंकी है जो रेस्टलेस नहीं है? सिर्फ एक ही मंकी ऐसा है दुनिया में. या somebody is written. Okay, Jayesh Bhaskar has written that it is the Hanuman. Very nice, thank you. That's correct answer. That's actually Hanuman. So that's the Hanuman, which is a monkey who is not restless. Rather, he's a cool-headed monkey. He is the most famous Hanumanji. When one becomes a devotee of the Supreme Lord, he chants Hare Krishna mantra, and then we can calm our mind easily. तो हमारा mind भी monkey की तरह है. वो कूदता रहता है, उछलता रहता है, कुछ कुछ सोचता रहता है और कुछ भी सुझाव देता रहता है, चाहे वो भले ही हमारे लिए अच्छे हो या ना हो, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बोलता रहता है फालतू में. तो हमारा माइंड भी एक बंदर के समान है, मंकी के समान है. बट हाउ कैन वी कंट्रोल दैट मंकी? क्या कोई तरीका है? यस, इट्स गिवन हियर. वी कैन बिकम द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड and chant Hare Krishna, and then we can calm our mind easily, as Hanuman could do it. Even though one's mind may be restless, naughty like monkey, which keep on jumping from one branch to another. Okay, so we have exercise here, but I will skip it because we have less time. So
Yes, so these are some of the other articles which I have kept, which tells about reincarnation. You must have heard about Ian Stevenson. कि उसने बहुत सारे केस के मतलब he kind of studied so many cases of reincarnation. तो आप देखो क्या हो रहा है इस पिक्चर में जो ऊपर मैंने लगाया है कि ये आदमी मर गया है, बूढ़ा बेचारा, उसके ऊपर बेड के ऊपर लेटा हुआ है, मर गया है, उसका सोल निकला 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 और ये जो लेटी हुई है लेडीज इनके वूम में आ गया. नाउ ही इज गोइंग टू गेट ए अदर this thing body. It is our nature to forget. I may not remember what lunch I ate a week ago on the same day. We can't even remember many things about our childhood in this very life. Is it then a surprise that we can't remember our past life? कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे को तो याद नहीं है कि मेरे पिछले जन्म में क्या हुआ. आप कैसे बोल रहे हो कि रिइंकार्नेशन होता है? मैं तो बिलीव नहीं करता उस पर. तो आप पूछ सकते हो कि ठीक है सर, आप कृपया करके बताएंगे आपने 3 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था. सोचने लगेगा माय लॉर्ड, ये तो कठिन क्वेश्चन पूछ लिया. ब्रेकफास्ट में 3 दिन पहले याद नहीं आ रहा है. यस, दैट्स व्हाट इट इज. हम लोग सब भूल जाते हैं. एग्जाम के बाद हमने क्या पढ़ा वो भी भूल जाते हैं, राइट? समटाइम इट हैपेंस. सो then how can we remember something of past life? Not possible. So for example, if some dear relative has died, can we go for a movie with our friends? Similarly, if we were to remember all the painful experiences of all our past life, we can't peacefully enjoy now. कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि reincarnation होता है, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हो रहा. मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है पिछले जन्म का. वो आपको याद इसलिए नहीं है कि वो भी भगवान की ही कृपा है आपके ऊपर. दैट इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ऑन यू, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर ऑल दैट पेनफुल एक्सपीरियंस कि पिछले जन्म में क्या क्या बुरा हुआ था मेरे साथ, तो ये जन्म भी आप खुशी से नहीं बिता पाओगे, क्योंकि वो सब याद आता रहेगा. अरे वहां पे कुएं में गिर गया था, किसी ने मेरे सर पे मारा था, तो वो सब आपके दिमाग में आते रहेंगे और आप नॉर्मल चीजें भी नॉर्मली नहीं कर पाओगे उसके चलते हुए, राइट? Therefore, material nature arranges to provide us with forgetfulness about our previous life, so that we may now freely go ahead with our desires for enjoyment. So here is another exercise which we are again skipping. Now I will quickly go through that. बहुत सारे धर्म जिनको हम बोलते हैं इंडिया में, सनातन धर्म, Hinduism, Christianity, Muslims, all that, they all talk about this fact of reincarnation, right? So I will not go deep. I will just show you that how ancient Greek, the ancient Greeks like Socrates, Pythagoras, Plato, they also had believed in this fact called reincarnation. They say divine origin of the soul's fall, duration of cycle of birth and death. So many things are said. In Buddhism also many things are said. I'm not going in details, but there are so many references quoted in this Christianity, and so many things are said. Many early churches fathers such as Alexandria and many of these people were advocates of reincarnationist thinking. So there are so many books about reincarnation, and बहुत सारी movies में भी इस concept को दिखाया जाता है. So he banned the teachings of pre-existence of the soul. तो ये जो emperor Justinian थी, for his own purposes, wanted to rally his subjects around Christianity, the popular creed of his empire, with the reincarnationist sect. तो एक बार क्या हुआ, ये क्वीन जो थी, ये इन्होंने बहुत सब गड़बड़ किया हुआ था. तो जब इनको पता चला क्रिश्चियनिटी के माध्यम से कि रिइंकार्नेशन करके होता है और मैंने जो भी गलत किया है इस जीवन में उसका भुगतान तो मेरे को करना होगा, तो उनको लगा कि ये मैं मिटा देते हूँ, मैं ये मिटा देती हूँ बाइबल से, तो ये रहेगा नहीं और मेरे को भी सफर नहीं करना पड़ेगा. बट दैट्स नॉट द फैक्ट. जस्ट बिकॉज यू हैव रेज्ड सम इंफॉर्मेशन, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट सफर इट. तो सफरिंग तो आएगा. सो ही बैंड द टीचिंग्स ऑफ प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल. तो अगर आप बाइबल में आज देखोगे तो आपको रिइंकार्नेशन नहीं मिलेगा, एंड द प्रूफ फॉर दैट इज दिस, क्योंकि इन लोगों ने हटा दिया. Give them one life only, he said, and then give them heaven or hell. तो बहुत कुछ है, बहुत डीप में हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में. इस्लाम में भी बहुत कुछ कहा गया है,
बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इस्लाम में. Yeah, I died as a mineral and became a plant. I died as a plant and rose to animal. I died as an animal and I was a man. Why should I fear when was I less by dying? So बहुत कुछ बताया गया है. Now, what is the relevance? So, have you seen a poor goat standing in a quay? तो क्या होता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद हमें क्या इसका what should be the teaching? What should be the lesson today? That we will see now, and we will end with this. तो इतना सब कुछ जानने के बाद कि reincarnation होता है, कि सब कुछ होता है, अगर जानने के बाद भी आदमी वैसा ही बना रहे जैसे पहले था, तो क्या उसकी जीवन में परिवर्तन आएगा? कुछ परिवर्तन नहीं आएगा. जैसे कि आप देखोगे ये जो गोट्स है, या जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर द साउंड. तो ये गोट्स दे आर थिंकिंग दैट सच ए नाइस टेस्टी ग्रास, तो एक एक करके सब कसाई खाने में जा रहे हैं. But the butcher is actually cutting them. और ये लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छी घास है, बहुत मजा आया, और खा लेता हूँ थोड़ा, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है. So the man is also thinking like that nowadays. वो सब कुछ भूल के बेचारा जानबूझकर अनजान बन रहा है. उसको सब पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट लाइफ में, but he doesn't want to know it. Blindly he just want to eat the grass. ठीक है, मरना है मर जाएंगे, पता है उसको, लेकिन फिर भी now these goats, when they are seeing that practically कि हमारे जो आगे वाली गोट थी उसको काट दिया गया, उसको बूचर ने काट दिया है, बट जो पीछे वाली गोट है वो ये नहीं सोचेगी चलो मैं भाग जाती हूँ एटलीस्ट बच के, जान बची तो लाखों पाए. ऐसे करके भाग जाती हूँ, बट ऐसा नहीं होता है. वो दूसरी गोट भी जाती रहती है, तीसरी गोट भी जाती रहती है. लेकिन मान लो आप और मैं अगर खड़े होते हैं उस लाइन में, तो क्या हम ऐसे ही देखते रहते चुपचाप, चलो ठीक है मेरी बलि चढ़ा दो? नहीं, हम लोग भाग जाते. तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ आज इस डिस्कशन के माध्यम से कि एक्चुअली व्हाट एवर वी हैव लर्न इज दिस. इतने नॉलेज पाने के बाद भी अगर हम लोग सेम लाइफ कंटिन्यू करते रहे तो क्या फायदा? लाइक ये गोट को सब कुछ पता है, तो देख रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. So this is the end here. Only an intelligent person tries to understand the meaning of life by asking questions like, अगर reincarnation reality है, can I decide my future body? क्या मैं अपना आने वाला शरीर निर्धारित कर सकता हूँ या डिसाइड कर सकता हूँ? And most importantly, if I am eternal, do I have to keep dying and being reborn again and again, or can I attain eternal life? If yes, how? क्या मैं इस मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं? अगर हाँ, तो क्या रास्ता है, कैसे कर पाऊंगा? The sure way to understand the mechanism is to learn about it from the person who built it. Similarly, the direct way to understand the cosmic manifestation, everything, cosmic machine, including the subtle mechanism of reincarnation, is we have to learn it from the person who knows it, and that's God. So one should therefore learn the truth from the authorized scriptures, which are directly the words of God. So this is what I wanted to share with all of you today. So now if any of you are wanting to ask a question, then you may ask. This is a slide of the recap that we saw. In this you can see the whole thing, what all we saw today. So how can I laugh at my suffering and be cool-headed? हाँ, cool-headed रह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है. Then we saw the process of attaining new gross body. We saw कि PhD from MIT USA, but after that वही same चीज ABCD. Then what is bodily platform, bodily consciousness, what is illusion due to subtle body, why practice spiritual life in youth, कौन गोदास है, कौन गोस्वामी है, the cool-headed monkey, reincarnation, जो अलग अलग धर्मों में बताया गया है, and that's how we summarize the whole discussion today. So now if any of you have any question, please do ask. We'll take few questions. Yeah. So one question has come in the chat. Yeah. Jayesh is asking, do soul itself decide in which material body should it take birth?
Yes, that's what the whole discussion is, Jayesh, today. The soul actually can decide. Generally, it does not decide because the karma decide. But if one can get free of karma, if let's say there is no karma remaining for me, then I can decide what I want to be next life. Then it becomes my choice. लेकिन अगर किसी का कर्मा ही है कि उसको एनिमल बनना है, तो then he has a very little freedom. He cannot decide. One can not only decide what body will he get in the next life, but he also can decide to quit this cycle of birth and death altogether, right? अगर वो आदमी चाहे तो इस साइकिल से बाहर भी आ सकता है. That is on to him. So I hope that answer, Jayesh. If the number of rebirth is not fixed, then why there is a there in concept of only 7 rebirth as it is stated while marriage? Yeah, 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो ऐसा ही एक रिचुअल टाइप का है, क्योंकि अगर वो दोनों कपल अगर मर जाएंगे तो what where will they go together? No, they will not go together. It depends on what karma they have done, and they will go respectively. One may become animal, one may become human being again. So it's all theoretical, it's nothing practical there. So that's not fixed, Jayesh. It is definitely not fixed. But why it is told like that, just to tell the importance of marriage. That marriage means it should go on and on and on. कहने का मतलब ये है. लेकिन आजकल तो अनफॉर्चुनेटली कितने सारे डाइवर्सेस और ये सब हो रहे हैं. Yeah. So just to now, anybody has any other question, or we will end here for today? Yeah. So If you have questions, you can ask them in chat or unmute yourself quickly. Yeah. So I will wait for maybe 30 seconds for questions, and then I will give you some conclusion for today, just a take home thing for today, and then we can end if there are no questions. Okay, thank you, Jayesh. Okay, seems like there are no questions. So just to tell you one thing before we. Just one announcement, sir. Okay. Yeah. So, like recently we completed this 8-session device course, and another one workshop we conducted for them in their winter vacations after their first semester exams. Like something kind of software training plus spiritual training kind of workshop. So, like we have shortlisted the students who have attended the sessions, like for device sessions, those who have attended 5 out of 8 sessions. So we are giving them certificate. And for skill foster workshop also, those who have attended 4 sessions out of 6 sessions, we are giving them certificate. So let me share my screen. I will just display the names, like all the students, those who are eligible for the both certificates. My screen is visible? Yes. Yeah. So all these 31 students, Shaker and all, both columns list is there. So all these students are eligible for device certification. So congratulations, all of you have finally made it, and we have certificate which is authorized from college, which is having sign off our those like HOD sir of first year department, and as well as Vijay Shilva Patil sir, who is like director of our choice club here at Kopargaon, and also of Consoft Tech CEO. There are sign offs we have on that certificate. So these are the students for device certification, and these are the students for skill foster workshop certification. So all students, you can, if your name is there in the list, all of you can send your email on WhatsApp to me so that I can mail your certificate maybe by tomorrow.
And for those who have, because of some few less attendance in few sessions, those who are not able to make it, so for them also it is not thing to be get demotivated in future. Like we will complete your those remaining sessions. We will make some arrangements, and again we will award you certificate. So no need to worry for those who have not got it. Okay. Okay, sir. Now we can proceed. Okay, I will just conclude in 2 minutes, maybe. So one thing which I really congratulate all of you for doing all these courses so wonderfully. It was very nice to see all of your names there. So this is really very helpful, I can say, because I have seen up after practically years that how the modern youth, they suffer like anything if they do not have this right knowledge at the right time. So you're very fortunate, chosen ones, uh, that you are getting this knowledge from your seniors, or whoever is giving you. And one thing that I want to share is, some of you might have got introduced to chanting Hare Krishna. So that's my personal experience. I have been chanting now almost around 10 years now. And I really feel that it's just a very nice way by which you can be peaceful in your life. You can be very much focused in your life. You can be very much goal oriented in your life, and you can be really happy in your life. So in my personal life, I have been trying this, to do this meditation every day. And it's now that you all have got introduced to this, I'm very sure that you all will find a very much a benefit coming from this chanting of Hare Krishna that you are going to begin, or you have begun already. So this is my own personal experience, and I have seen other people also, that how it benefits them at every level of their life, not just student life, but I know people who are married and chanting. There are people who are working in company and chanting. There are people who have retired and chanting. So there are, at every walk of life, there are people who are chanting. So it gives me great pleasure that many of you have started chanting, and it's a very nice activity which you will get to know as you pass time doing it. So with this, I would like to end from my side. I thank you all very much for giving me opportunity to speak to all of you. So thank you, sir. It was a very wonderful session, and surely all the students have got so many new things to get learned, and so many of them have opened up and asked so many intelligent questions as well. Uh, Yeah, questions were really good. Some of them asked good questions. yeah. So these students are very regular, and they attend our weekly sessions every Wednesday, every Saturday we conduct session, and with some of them we have started like we do daily mantra meditation as well. Oh, great. So some of the points you told, like the choice is ours whether we have to become Godas or Goswami, and the point that came that for following all these things we require discrimination and determination, which comes through this mantra meditation. So these points were really striking, and surely all of us we will try to implement all this here at with all our group members. Yeah, thank you all very much. You're all already doing so well. It's very nice to see. Thank you, sir. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you all the participants. I will send the quiz link in WhatsApp group. Okay, thank you very much.